Morning, sir. Good morning, good morning, good morning. All right, so we'll continue with our GPS. We just start the class in 5 minutes, just 5 minutes. Okay, so just relax, let everybody join, then we start the class. We start in 5 minutes. All right, gentlemen, so where we have been in the last class, we started off with the GPS, correct? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So basic few things we talked about GPS. What is GNSS? So GNSS is a generic term for any position fixing system which uses satellites to fix position on the surface of the earth or near the surface of the earth. If it is on the surface of the earth, it will be only latitude and longitude. If it is also in the air, then latitude, longitude, and also the altitude, three-dimensional position. If we are talking about something in space, we say how much height and where it is. So latitude, longitude, altitude. We were trying to talk about how this position fixing is done. We had gone through a couple of slides. We will start that once again. We understood that GPS is a GNSS. GNSS, as we said, any satellite system which is used to fix position. So there are many such systems. Different countries have their own systems.
Some do not have, of course. So like USA is having something called GPS, Russia is having something called GLONASS, China is having something called BEQ, European Union, something like, Galileo. India is also having its own system, but it is a work in progress basically. So अभी हम regional position fixing करते हैं, अपने country के आसपास का करते हैं. It is not necessarily global system, what we call as NAVI or IRNSS, what we call it. We will go to the slide and we will see the principle of position fixing by the GPS system or any GNSS system. There were two basic inputs which is required for position fixing. Known stations, वो स्टेशन वहां पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता हो, वो स्टेशन वहां पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता हो. अनदर स्टेशन जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है जिससे मैं सिग्नल रिसीव करता हूं, आई एम नॉट नोइंग माय पोजीशन बट आई हैव अ रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर, radio receiver, which receives the signal from these stations. The stations are transmitting signals which is giving their own position. तो उसी के सिग्नल से मुझको पता चल जाता है कि वो कहाँ है. उसने अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मुझको भेज दिया, उसने अपने कोऑर्डिनेट्स भेज दी मुझको, उसने भी भेज दी, उसने भी. They are also transmitting some kind of signal जिससे मैं उनका रेंज पता कर सकता हूँ कि मेरे से वो कितने दूर, इससे मैं कितने दूर हूँ, इससे कितने दूर हूँ, इससे कितने दूर, किसी से 500 माइल हूँ, किसी से 300 माइल हूँ, किसी से 350 माइल हूँ. सो दो इनपुट रिक्वायर्ड है. क्या क्या? लोकेशन ऑफ द ट्रांसमिटिंग स्टेशंस, नंबर 2 द डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिटिंग स्टेशन फ्रॉम मी. तो हमारा जीपीएस रिसीवर या जीएनएसएस रिसीवर जो है, ये दोनों चीजें करता है. एक तो उसका लोकेशन पता कर लेता है और उसका रेंज पता कर लेता है कि कितनी दूर. ये दोनों करता कैसे है? उन्हीं सिग्नल से जो वो स्टेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं. हाउ द पोजीशन इज फिक्स्ड? बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड ट्राइलैटरेशन. व्हाट इज दिस ट्राइलैटरेशन? चीज क्या है, कैसे पता चलेगा? उसका पोजीशन पता चल गया, उसका चल गया, उसका चल गया, मेरा कैसे चले? By a mathematical process. On a trigonometry अगर हम देखें तो ग्राफ पेपर पे अगर 3 पॉइंट पता हो और तीनों पॉइंट से अगर रेंज पता हो तो ग्राफ पे एक अननोन पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम निकाल सकते हैं, एक्स वाई निकाल सकते हैं. कैसे? लेट अस गो टू द स्लाइड्स और पीपीटी में देखेंगे व्हाट वी डू, हाउ वी डू. So allow me to go to the slides. All right, so what we said that the process is trilateration. It is basically a trigonometric function, mathematical exercise. हमारे पास कुछ इक्वेशन होगा, वहां कुछ वैल्यूज डालेंगे तो कुछ वैल्यूज निकल आएंगी. ये मैथमेटिकल फंक्शन इज डन विद इन द रिसीवर. उसमें जो कंप्यूटर सिस्टम है, प्रोसेसर है, वहीं पे सारा कैलकुलेशन होता है, ऑटोमेटिकली होता है. आपको कुछ नहीं करना. The receiver receives the signal, finds out the position, finds out the range, does the trilateration
mathematical process and gives the result in latitude, longitude on your screen. As we said, the two inputs required for this mathematical exercise is what? Read this again and again. 4 बार पढ़िए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए. ये चीज बार बार आएगी पूरे ही डिस्कशन में, पूरे टॉपिक के डिस्कशन में ये चीज बार बार आएगी. Location of the known station, transmitting stations, and the ranges of the receiver from these stations. So let us now go here. You are seeing a blue dot on the screen. It is a transmitting station. Let us call it transmitting station 1. This is transmitting some kind of signal. Understand this? And I am somewhere on the screen. मेरी पोजीशन पता नहीं मुझको, मैं कहीं भी हो सकता हूं, लेकिन मैं रेडियो सिग्नल रिसीव कर रहा हूं. मेरा जीपीएस रिसीवर व्हाइट स्पेस में कहीं पे भी है, आई डोंट नो वेयर, बट द स्टेशन विच इज ट्रांसमिटिंग सिग्नल, उससे मुझको पता चल गया कि इसका पोजीशन क्या है, इसका लैट लॉन्ग पता चल गया मुझको. क्यों? क्योंकि ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है सब तरफ. So I find out that station 1 is at so and so latitude, longitude, and I am somewhere located at R1 distance from this transmitting station. R1 can be 200, 300, 500, 700, 1000 miles, 5000 miles, 50,000 miles, no issues. Now, if the station 1 is at the given position as you see on the screen, and if you are located at a distance of R1 from the station, what is your possible location? Where can you be? Sir, at a circle with radius R1. Very good. So you can be anywhere on this circle. Infinite number of positions possible for you, which is on the position circle 1. You can be anywhere on this circle. So what we do, we look for another station. So there is another station, the blue dot, which is station 2. This station 2 is also transmitting signals all directions. So if I am here, I receive the signal. If I am here, I receive the signal. If I am here, I receive the signal. तो कहीं पे भी हूं मैं इसका भी सिग्नल रिसीव कर सकता हूं. The station 2 which is transmitting these signals, on the basis of that I find the position of the station, latitude, longitude, and I also find out the range कि वो मेरे से कितनी दूर है. So the receiver calculates that the receiver is at R2 distance from the station. अगर आप थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन सर्किल को भूल जाएं, तो स्टेशन 2 से मैं R डिस्टेंस पे हूं. What is my possible location? Yes, if I am located at R2 distance from station 2, what are the possible locations? It's an infinite location with radius R2 around station number 2. Great. एकदम सही बात. So
I can be located anywhere on this circle, which is position circle 2. Remember that I was at R1 distance from station 1, and at the same time I am also R2 distance from station 2. So now can you see that these are the two possible locations where these two conditions are satisfied? या तो मैं यहां से होऊंगा इस पोजीशन से, R2 डिस्टेंस यहाँ, R1 डिस्टेंस यहाँ, या ऑल्टरनेटली मैं यहां पे भी हो सकता हूं, यहां से R2 डिस्टेंस, यहां से R1 डिस्टेंस. सो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस जो थी, that is reduced to how many? How many possible locations? 2 positions, sir. 2. Very good. तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रह गया, इनफाइनाइट से 2 पे आ गए. अब मुझको ये एम्बिग्यूटी खत्म करनी है, ये कंफ्यूजन खत्म करना है. यहां हूं कि यहां हूं, ये डाउट खत्म करना है. सो व्हाट आई डू, आई लुक फॉर अ थर्ड स्टेशन. दिस इज स्टेशन 3. Again, this is also transmitting signals. The signals are transmitted in any direction, all directions. So if I am here, I receive. If I am here, then also I receive the signal. I find out the latitude, longitude of station 3, also the range. Let us say the range is R3. माइक्रोफोन है. ओके के माइक बंद कर ले. हाँ, okay. So I am located at R3 distance from station 3. Now, as can very clearly be seen, this is the only position from where 3 conditions are getting satisfied at the same time. स्टेशन 1 से इतनी दूर होना है, R2 से इतना दूर, R3 से इतना दूर. सिर्फ यही एक पोजीशन है जहां से ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं. इस पोजीशन को हम मान लेते हैं कि यह है XY. अगर हम इसको मानते हैं X1 एंड Y1, ये है X2 और Y2, ये है X3 एंड Y3. So do we have 3 known positions, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, known positions on a chart? When all these 3 factors are included in a formula, in an equation, then we can find out the values of X and Y. That gives me my location. Remember that I have it available, और X3 Y3 ये तीनों अवेलेबल है मुझको. कैसे अवेलेबल है? Anyone? How is it available to me? Because they are intersecting at a common point. No, because they are transmitting. मैं अपने कमरे में बैठ करके रेडियो मिर्ची सुनता हूं कि नहीं? यस, हाँ ना बोलो. Yes. मैं यहीं पे बैठे बैठे ऑल इंडिया रेडियो भी सुनता हूँ. अपने ही घर में बैठे बैठे ऑल इंडिया रेडियो भी सुनता हूँ. अपने ही घर में बैठे बैठे रेडियो सिटी भी सुनता हूँ और FM फीवर भी सुनता हूँ. सब लोग अलग अलग जगह है ना, सबके ट्रांसमिटिंग स्टेशन अलग अलग जगह है. अगर रेडियो सिटी ने कहा कि जी नमस्कार, मैं दिल्ली में यहाँ से बोल रहा हूँ, फला जगह से, इतने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से बोल रहा हूँ, तो मुझको पता चल गया कि नहीं कहाँ है वो? Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. रेडियो सिटी ने कहा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं गाजियाबाद से बोलता हूँ, मेरा स्टेशन गाजियाबाद, तो पता चल गया कि नहीं मुझको? ऑल इंडिया रेडियो कहती है मैं नोएडा सेक्टर 16A में हूँ,
तो मुझको पता चल गया कि नहीं तीनों स्टेशन कहाँ कहाँ है। यस सर। इंटरसेप्शन पॉइंट जो है वो तो बाद में हम निकालेंगे, वो तो हम ट्रायलैटरेशन कर लेंगे तब निकलेगा कि हाँ ये वाली पॉइंट है। इंडिविजुअली तो हम पता कर रहे हैं ये फ्रॉम द सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय द स्टेशंस। So this is how is the process followed for finding out the position. So what did we require here? Again, repeating इसका location and range. Location, range. Location, range. ये दो चीजें चाहिए मुझको स्टेशन से, तीन स्टेशन, तीनों से range. Then I can calculate it mathematically to find out what is the location of this position. Any questions here? नहीं सर। सर एक बार वो टू बेसिक इनपुट वाली फाइल दिखा दे, वो स्लाइड दिखा देना। Okay. Yes. Is it okay? यस सर, डन, थैंक यू। All right. तो उसके बाद आपने ये देखा था ट्रायलैटरेशन का मेथड। So read on. Just go through the slide. We have repeated this 10 times already now. ट्रायलैटरेशन मेथड क्या होता है सर? बोला ना मैथमेटिकल एक्सरसाइज है। ओके सर। नाम सुना है इंटीग्रेशन, यस सर। डिफरेंशिएशन, यस सर, 12th में है ना? हाँ तो फैक्टराइजेशन सुना है, यस सर। तो ट्रायलैटरेशन सुना है। यस सर, ये मैथमेटिकल का है। सब वही है, जैसे इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन है, वैसे ट्रायलैटरेशन है। यस सर। इंटीग्रेशन में हम ये करते हैं कि छोटी छोटी वैल्यूज को लेकर के एक बड़ा वैल्यू बनाते हैं, डिफरेंशिएशन में बड़े वैल्यूज को कट करके छोटा वैल्यू बनाते हैं। यहाँ पे तीन नोन पॉइंट से एक अननोन पॉइंट को निकालते हैं। सबकी अलग इनपुट, सबका अलग प्रोसेस, सबका अलग रिजल्ट, सबका अलग यूज। ठीक है कि नहीं? यस सर। तो जैसे जोड़, जैसे घटाव, जैसे मल्टीप्लिकेशन, जैसे डिवीजन, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वैसे ट्रायलैटरेशन, मैथमेटिकल एक्सरसाइज। समझे? समझे कि नहीं? यस सर। Okay. All right. So we already talked about this in the GNSS. पिछली क्लास में हमने बात किया था कि किसी भी GNSS में 3 सेगमेंट होते हैं। तो 3 सेगमेंट में फर्स्ट वन इज स्पेस सेगमेंट। GNSS में we already understood that there are satellites which are used for position fixing,
And these 3 points that we wanted, location of transmitting stations, these are now satellites. It is not on the earth, but these are up in the sky. These stations जो हमने स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 किया था, वो सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3, सैटेलाइट 4 एंड सैटेलाइट 24 आल्सो 24 सैटेलाइट्स हैं, और ये स्टेशंस वहीं से ट्रांसमिट करते रहते हैं. These satellites are transmitting signal which I receive in my GPS receiver. वो GPS मेरे मोबाइल में भी हो सकता है, मेरे घड़ी में भी हो सकता है, मेरे लैपटॉप में हो सकता है, मेरे कार में हो सकता है, मेरे बाइक में हो सकता है, या मेरे जहाज में हो सकता है. So the segments of GPS system we are talking about. Remember that GNSS में स्पेस सेगमेंट तो है, लेकिन हो सकता है किसी के 18 हो, तो किसी के 20 हो, तो किसी के 24 हो, किसी के 26 हो. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किसके किसके स्पेस सेगमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं? GPS सर. जीपीएस मतलब यूएस बेस्ड पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम, यूएस owned and operated GNSS. Is that correct? So Yes, there sir. are few points that we must know. These are only facts. इसमें कुछ नहीं, थोड़ा बहुत समझना है, ज्यादा याद रखना है. तो स्पेस सेगमेंट में क्या होता है? Okay, the segments that we are talking about. यहां से कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि जीपीएस काम कैसे करता है. Take a minute to go through this. इसके पहले कि मैं बोलना शुरू करूं, try to get your understanding, try to read this diagram. Remember that we already have said that satellites are transmitting signals which is received by the receiver, but ये ट्रांसमिट करेगा तो क्या करेगा? कोई बताएगा तब तो, कोई उसको देगा तब तो. हमारा कंप्यूटर है, उसमें कौन सा फाइल खुलेगा? मैं बताऊंगा तब तो. कौन से गाना सुनूंगा मैं उसमें? मैं प्ले को जो करूंगा उसको, वही ना. कौन सा मूवी दिखाएगा मुझको मेरा लैपटॉप? वही जो मैं कहूंगा. दैट मीन्स आई एम इन कंट्रोल. मैं ही डिसाइड करता हूं कि मेरा कंप्यूटर क्या काम करेगा. तो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? मास्टर स्टेशन. मास्टर स्टेशन. सब मिलके मास्टर स्टेशन ही करेगा. वेरी गुड. मास्टर स्टेशन करेगा, लेकिन उसको सपोर्ट तो चाहिए. जहाज भी मास्टर चलाते हैं, लेकिन बिना चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, क्रू, इंजन रूम के बिना तो नहीं चलता. तो मास्टर कंट्रोल स्टेशन ओवरऑल इंचार्ज तो है, लेकिन सपोर्ट भी चाहिए. तो हम सबको मिला के कंट्रोल सेगमेंट बोलते हैं. एवरीथिंग वी कॉल एज कंट्रोल सेगमेंट which is having 3 parts. What is that? There is master control station, which is assisted by monitor stations and also ground antennas. So satellites को कंट्रोल करने के लिए, सैटेलाइट कहाँ घूमेगी, कितने हाइट पे होगा, कितनी तेजी से चलेगा, क्या ट्रांसमिट करेगा, everything is done by the master control station. लेकिन मास्टर कंट्रोल स्टेशन एक बार में तो सबको देख नहीं सकता. सारे सैटेलाइट्स को तो नहीं देख सकता. कुछ इधर होंगे तो कुछ उधर होंगे आपके.
So that is all put together is called control segment or ground segment, which is all to control the satellites, where they go, how they go, what they transmit, all to be decided by master control station and executed through monitor stations and ground antennas also. So we have seen the three segments that we are talking about. The space segment is all about the satellites. Ground segment or control segment all about controlling the satellites. And the third one, the user segment, which is you and I, जो हम लोग यूज करते हैं finally, the end user. End user can be civilians like you and I, or it can be defense services, military, it can be aircraft, it can be health services, ambulance में भी जरूरत पड़ सकती है. बहुत हेवीली मॉनिटरिंग होती है आजकल, जो ट्रक्स वगैरह सामान लाद के चलते हैं उसमें भी जीपीएस वगैरह लगा होता है, तो ट्रैक कर सकते हैं कि अभी जहाज कहाँ पे है, ट्रक वैसे मॉनिटर कर सकते हैं कहाँ पे है जहाज. सो ओवरऑल सिनेरियो समझ में आया तीन सेगमेंट्स का? ओके. नाउ आई also suggest you to read the arrows. कौन ट्रांसमिट कर रहा है, किसको ट्रांसमिट कर रहा है, just try to read that on the screen. Just try to make up your mind as to, take 2 minutes, no issue, just study, concept clear हो जाएगा फिर. Just take 2 minutes to study कौन कहाँ किसको ट्रांसमिट कर रहा है, एंड देन आस्क मी सम क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ये क्या है सर, ये समझ में नहीं आया, ये क्या कर रहा है, ये लाल वाली हरी वाली ये क्या कर रहा है. आस्क मी सम क्वेश्चन आफ्टर स्टडिंग. So this master station is transmitting as well as receiving signals. Yes, of course. Yes, it is Sir, transmitting. what is this master station to ground antenna, that red line? Yes, very good. Good observation that master station is transmitting or sending data to ground stations. From ground station, where it is going? To space segment. To the space segment, to the satellites. मतलब एक चीज क्या हम सोच सकते हैं इसमें कि मास्टर कंट्रोल स्टेशन ने कहा कि सैटेलाइट्स ये ट्रांसमिट करेंगे जी, इनको ये देना है, तो सैटेलाइट्स को कैसे पहुंचाया जाए? से सर मास्टर से That work ground is segment done गया. by ground antenna. या तो जो मेरे सामने होंगे उसको मैं डायरेक्ट ट्रांसमिट कर दूंगा सैटेलाइट्स को, जो मेरे ऊपर में सिर के ऊपर है. लेकिन मैं यहाँ पे हूँ और जो सैटेलाइट्स अमेरिका में घूम रहे हैं अभी, अमेरिका के छत के ऊपर हैं, वो उसको कैसे भेजूंगा? ग्राउंड सर उसके लिए दूसरा एंटीना चाहिए होगा. वेरी गुड. तो अमेरिका में एक ग्राउंड एंटेना लगा दें हम, और यहाँ हाँ, से सर. ग्राउंड एंटेना को भेज दें. ग्राउंड एंटेना जिसको देख रहा होगा जो सैटेलाइट्स, उसको भेज देगा. Yes sir. लॉजिकल? Yes sir. Yes sir. Understood. इसी के लिए it is directly sending to the satellite and through the ground antennas also it is sent in order to cover the whole world. क्योंकि सैटेलाइट्स होंगे तो चारों बगल होंगे, अर्थ के चारों तरफ होंगे, ग्लोबल सिस्टम है ना भाई. हाँ सर. मैं कहीं वर्ल्ड में कहीं रहता हूं तो मुझको सैटेलाइट दिख जाते हैं, तो ये सैटेलाइट्स हर जगह होंगे ताकि मुझको ग्लोबल सर्विस मिल सके. सर ये कंट्रोल सेगमेंट का क्या काम है सर? कंट्रोल सेगमेंट सैटेलाइट से कंट्रोल सेगमेंट को दिया, उसके बाद फिर मास्टर को दिया. कंट्रोल सेगमेंट मैंने कहा
कि तीनों को मिला करके है कंट्रोल सेगमेंट ये। ओके, तीनों मिला के, यस सर। हाँ, मास्टर, मॉनिटर स्टेशन, ग्राउंड एंटेना तीनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं ना सैटेलाइट्स को। यस सर। तो तीनों को मिला करके हम बोल रहे हैं कि ये कंट्रोल सेगमेंट है। एक स्लाइड में पीछे जाता हूं। अच्छा नहीं, आगे आएगा, यहाँ पे नहीं। तो हमने कहा कि एक सेगमेंट है स्पेस सेगमेंट जो कि सैटेलाइट्स है, दूसरा सेगमेंट है जो कि कंट्रोल सेगमेंट है, और तीसरा सेगमेंट है जो कि यूजर सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट में कौन कौन है? ग्राउंड सेगमेंट और मास्टर। ग्राउंड कंट्रोल सेगमेंट में तो तीनों लोग हैं। यस कंट्रोल सेगमेंट में है कौन कौन? नहीं समझ में आया? कंट्रोल सेगमेंट में सर मॉनिटर है, स्टेशन है, ग्राउंड एंटीना है, मास्टर स्टेशन है, तीनों मिला के। यस, एग्जैक्टली। तो कंट्रोल सेगमेंट तीनों को मिला के बनता है, तीनों मिल के काम कर रहे हैं ना, तीनों मिल के कंट्रोल कर रहे हैं सैटेलाइट्स को, इसलिए 3 पार्ट में है। सब यूनिट्स हैं कंट्रोल सेगमेंट। So now that you have understood, let us get to know how things are working once again. These stations or satellites are moving in the sky in an orbit, and they are transmitting signal all over the place. सबको ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसमें कुछ सिग्नल जो है इट इज रिसीव्ड बाय द ग्राउंड सेगमेंट, जिसमें कि मास्टर स्टेशन है, मॉनिटर स्टेशन भी रिसीव कर रहा है, और ग्राउंड एंटेनास भी रिसीव करते हैं, लेकिन वो रिसीव सिग्नल को ज्यादा कुछ नहीं करते। ये ट्रांसमिट करता है सर ग्राउंड एंटीना। यस, कुछ डेटा अपलोड करनी है, मुझको बताना है सैटेलाइट को कि तुम ABC ट्रांसमिट करो, नहीं तुम XYZ ट्रांसमिट करो, तो मुझको उसको कमांड भेजनी पड़ेगी ना रेडियो से। यस सर। तो कैसे भेजूंगा? ग्राउंड एंटेना। तो ग्राउंड एंटेना हो सकता है कि एक यहाँ पे भी लगा हो मास्टर स्टेशन के साथ, तो वहीं भेज देगा, और जो दूर में लगे होंगे उसको ट्रांसमिट कर देगा। So now the space segment. These are some hard facts which you must remember. एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। Write a short note on the space segment of the GPS system. तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे आपको लिखनी पड़ेंगी। These are information. अगर समझेंगे तो याद रखना भी आसान हो जाएगा, नहीं तो याद करके लिखना पड़ेगा। तो ये स्पेस सेगमेंट में क्या चीजें हैं? 24 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, मतलब हमेशा काम कर रहे हैं, जो ट्रांसमिट कर रहे हैं। देयर आर 24 ऑफ देम, प्लस देयर आर 8 स्टैंड बाई सैटेलाइट्स ऑल्सो। 24 तो एक्टिव हैं जो काम कर रहे हैं अभी, जिनसे मैं सिग्नल रिसीव कर सकता हूं, लेकिन देयर आर 8 स्टैंड बाई सैटेलाइट्स ऑल्सो। अगर कोई सैटेलाइट खराब हो गई तो स्टैंड बाई में से आगे कर देंगे और उसको चालू कर देंगे, ताकि जीपीएस सिस्टम गड़बड़ ना हो। All these satellites have their own propulsion system. ये propulsion क्या होता है? जहाज का propulsion system मालूम है? जहाज में propulsion system होता है या नहीं? यस सर। यस सर। क्या क्या होता है उसमें? प्रोपेलर सर। बस इंजन, प्रोपेलर, रडर। हाँ, प्रोपेलर एंड रडर। तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि कितना जाना है और किस तरफ जाना है।
Similarly, the satellites also are having their own propulsion system. That means at what speed to go, where to go, that can be done by the satellites. They have this feature. लेकिन जहाज क्या अपने आप चलती है, अपने आप मुड़ती है, या कोई मोड़ता है उसको? यस सर, यस सर, क्या कोई मोड़ता है सर, ऊपर से प्रोपेलर देता है सर, कमांड जाती है ना? यस सर। तो सैटेलाइट किधर को जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? मास्टर स्टेशन सर। वेरी गुड, मास्टर कंट्रोल, मास्टर स्टेशन। मास्टर कंट्रोल स्टेशन विल डिसाइड कि सैटेलाइट किधर को जाएगा, कहां जाएगा, एंड दैट इज डन रिमोटली। सर एक क्वेश्चन था, ये ऑर्बिट्स जो रहती हैं 6 डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो ये ऑर्बिट्स अलग अलग डिस्टेंस पे रहती हैं क्या, लाइक ज्यादा हाइट पे? अभी आएगा, मैं ऑर्बिट के बारे में डिटेल में बताता हूँ। आई विल Okay. टॉक टू अबाउट दिस इन डिटेल। So 24 satellites active, 8 satellites in standby, total 32 satellites. Satellites have their propulsion system that can be remotely operated by the master control station. कैसे, किसके थ्रू? डायरेक्ट या ग्राउंड एंटेना के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता है? ग्राउंड एंटीना के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता है सर। एग्जैक्टली। एक ग्राउंड एंटेना मास्टर कंट्रोल स्टेशन के साथ ही लगी है, जो वहां पे सामने होगा उसको डायरेक्ट भेज देगा, लेकिन रहेगा तो ग्राउंड एंटेना के थ्रू ही जाएगी ऊपर, और नहीं तो दूसरे जगह लोकेटेड होंगे उसके थ्रू भेज देगा। Now that we said 6 orbits, these are polar orbits. That means exactly polar तो नहीं है, equatorial plane पे the orbits are inclined at an angle of 55 degrees. What does it mean? If this is the Earth, North South Pole, equator, the satellites are moving from here to here. इधर से आता है, घूम करके चला जाता है। So अगर हम इक्वेटर का प्लेन लें और इसका प्लेन लें, तो this is 55 degrees. The plane of the orbit and the plane of the equator are having an angle of 55 degrees. Understood? No. सर एक बार और प्लीज। Yes, नहीं, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ये बताना पड़ेगा मुझको, विजुअल में दिखा करके बताना पड़ेगा। So I am exiting here. Let me just pick up the globe. Okay. This is the Earth. Is this the equator? This is the pole. This is the equator, right? So this plane is the equatorial plane. Is that correct? यस सर। Now the satellites are moving in orbit like this. इसका प्लेन ये हो गया या नहीं? ऑर्बिट का प्लेन इस प्लेन में घूम रहा है। सो इसके और इसके प्लेन के बीच में, इक्वेटर के प्लेन और ऑर्बिट के प्लेन के बीच में कितना एंगल है? 55 डिग्री कर रहा है। 45 डिग्री। Yes, yes. And there are such 6 planes. तो एक प्लेन है ऐसे, दूसरा प्लेन है ऐसे, तीसरा प्लेन है ऐसे,
सो एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा, एक घूम रहा है ऐसे, दूसरा घूम रहा है ऐसे, तीसरा घूम रहा है ऐसे, all are inclined to the equatorial plane by how much angle? 55. 55 डिग्री। Understood? It is not 360 divided by 55. Clear है? नहीं है क्लियर? हाँ ना बोलोगे कुछ? सर मतलब हर प्लेन के बीच के डिफरेंस भी 60 डिग्री का रहेगा, जैसे मतलब नहीं, एक एक प्लेन आएगा, फिर उसके 60 डिग्री बाद में दूसरा प्लेन आएगा, फिर ऐसे मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पे हाँ रहेंगे ना। एग्जैक्टली। तो ओके। एक प्लेन ऐसा है, आप ये मान के चलो कि इक्वेटर का प्लेन ये है, ठीक है? हाँ सर। इसको इमेजिन करके रखो। अब एक प्लेन जो हमने रोटेट किया वो ऐसे है, तो इसके और इसके बीच में, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में 55 डिग्रीज है। यस सर। एक दूसरा प्लेन है जो ऐसा है, ये भी 55 डिग्रीज है। यस सर। एक प्लेन ऐसा है, ये भी 55 डिग्रीज है। सो 1 2 3 4 5 6, अंडरस्टूड? यस। So there are 6 planes. All these are 6 orbits, or they are inclined to the equatorial plane by 55 degrees. And between the planes, as you rightly said, there will be 60 degrees of difference. एक प्लेन ऐसा और एक प्लेन ऐसा, ये भी इस तरफ को 55 डिग्री, दूसरा ऐसा, ये भी 55 डिग्री, ये भी 55 degrees to the equatorial plane, and this one also 55 degrees. बट इन दोनों के बीच में 60 डिग्रीज का गैप हो। Going back again to the slide. Six orbits, inclination 55 degrees. Remember जो हमने इसके पहले बात किया था कि 24 active satellites, 8 standby satellites having their own propulsion system, remotely controlled by the master control station through the through the ground antennas. इसके बीच में एक क्वेश्चन आता है कि मास्टर कंट्रोल स्टेशन कब चाहेगा कि कब चाहेगा कि इसका पाथ चेंज करना है? जब देखेगा कि सैटेलाइट इज गोइंग आउट ऑफ द ऑर्बिट, देन ओनली इट नीड्स टू बी ब्रॉट बैक टू द ऑर्बिट। आप गाड़ी का हैंडल कब घुमाते हैं? जब देखते हैं कि गाड़ी रोड से नीचे जा रही है। अगर रोड पे है तब हैंडल नहीं हिलाते। सो सैटेलाइट इफ दे आर ऑपरेटिंग इन देयर ऑर्बिट राइट, तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब वो ऑर्बिट से बाहर जाने लगे, थोड़ा डेविएशन होने लगा, तो मास्टर कंट्रोल स्टेशन उसको वापस लेके आएगा ऑर्बिट पे। लेकिन कैसे पता चलेगा मास्टर स्टेशन को कि ये डाइवर्ट हो रहा है, सैटेलाइट डाइवर्ट हो रहे हैं? कैसे होगा? सर उनका एंगल चेंज होएगा। सर सैटेलाइट्स अपनी मॉनिटरिंग स्टेशन स्टेशन, का मैसेज भेजती हैं। मॉनिटरिंग स्टेशन, ठीक है, जो निटिग्रिटीज होंगी वहां से सैटेलाइट से सिग्नल आता है जिसमें वो अपना पाथ वगैरह सब बता रहा है। लेकिन वो पाथ रिसीव करने के लिए कोई होगा तो सही। मास्टर स्टेशन तो अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में सैटेलाइट है वो सही जगह है या नहीं कौन देखेगा? तो न्यूजीलैंड में एक मॉनिटरिंग स्टेशन लगा दिया इन्होंने। जो सैटेलाइट न्यूजीलैंड के ऊपर से पार हो रहा है, उनके आसपास में है,
उसका डेटा मॉनिटरिंग स्टेशन कलेक्ट करके और मास्टर स्टेशन को भेज देगा। मास्टर स्टेशन डिसाइड करेगा कि सब ठीक ठाक है या नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो ग्राउंड एंटेनास के थ्रू करेक्शन सिग्नल्स भेजे जाएंगे। So, second fact about orbits, also interesting that all these satellites are at a height of 20,200 kilometers. Orbit जो है वो अर्थ के सरफेस से 20,200 kilometers above the surface of the earth is located. This is called something called MEO, medium earth orbit. So these satellites are in medium earth orbit. This 20,200 kilometer lies in the range of medium earth orbit, and they are moving, the satellites, they are moving at the speed of 3.9 kilometer per second. एक सेकंड में तकरीबन 3.9 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं। इस स्पीड का रेलेवेंस क्या है? Why it is only this much of speed? वो इसलिए कि the satellites, when they are completing one cycle, one complete rotation of the earth or revolution of the earth, इसमें लगता है इसको 12 घंटे। That means in 24 hours it will be completing 2 orbits. So 3.9 kilometer is the speed which gives the satellite an orbital period of 12 hours. अगर इसे तेज घूमेगा तो जल्दी घूम जाएगा, इससे धीरे घूमेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। So it is so managed that it is taking 12 hours to complete one chakkar of the earth. So now can you tell me कितने देर में एक सैटेलाइट अर्थ पे उसी पॉइंट पे होगा? 12 आवर्स। अगर मैं, हाँ जी, 12 आवर। 12 आवर्स, ओके। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दूसरा कुछ बोल रहा था। कोई और भी बोल रहा था कुछ? नहीं सर, 12 आवर्स। 12 आवर्स नहीं, तुम कुछ और बोल रहे थे। 24 hours, okay. If this was the earth, if the satellite is here, 12 घंटे में घूम करके वापस आता है यहाँ पे। We are talking about the position on the earth. जब 12 घंटे में when it is taking a round like this, ये अर्थ घूम कर यहाँ पे नहीं चला जाएगा ये वाला पॉइंट 12 घंटे में? डिग्री हाँ सर। दूसरे तरफ चला जाएगा ना। फिर अगले 12 घंटे में जब ये यहाँ पे आएगा तो दूसरा चक्कर लगा के आएगा। That means every 24 hours it will come back to the same point. 12 घंटे में सैटेलाइट तो अपनी जगह आया, लेकिन अर्थ दूसरी तरफ चला गया ना। हाँ सर। तो 24 घंटे में it is coming back to the same point on the earth. चौबीस घंटे is one sidereal day. Basically we are talking about not necessarily 24, but one sidereal day which is 23 hours 56 minutes 4.09 seconds. उतने देर में 2 चक्कर लगा लेता है। Now satellites are requiring power supply. The satellites also are required to transmit signals towards the earth for us so that we can receive and fix our position.
तो उसमें सोलर पैनल भी लगा होता है पावर के लिए और एंटेना भी लगा होता है ट्रांसमिशन के लिए. So there is this solar power and there this antenna which is transmitting towards the earth. It is in such a way that the solar panel is always pointing to the sun and the transmitting antenna is always towards the earth. Because space में तो transmit करना नहीं, GPS signal space में तो कोई use नहीं करने वाला. Most likely we are going to use it on the earth. So the antenna is oriented always towards the earth. The solar panel is oriented always towards the sun, ताकि उसको हमेशा full energy मिलता रहे. Now also one thing we should note that around the earth these satellites are going in the orbit. So there are 24 satellites and 6 orbits. So each orbit should have how many satellites? Sir, 4. 4, naturally. 6 orbits and 4 satellites each multiplied gives you 24. 24 total, sir. Yes. सर स्टैंड बाय सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में रहती है? इसी में रहती है या उनका अलग ऑर्बिट होता है? नहीं, रहता है इसी ऑर्बिट में रहता है. एंड एज यू नो इट इज ऑलरेडी हैविंग प्रोपल्शन सिस्टम, सो उनको इधर उधर थोड़ा बहुत शिफ्ट किया जा सकता है रिमोटली बाय द मास्टर स्टेशन. They can be put back into new orbit whenever it is needed, but they are already flying up there. They are already in the orbits in distributed amongst this. Now as you can see that these 4 satellites have to be placed somewhere in the orbit. अब ऐसा तो नहीं ना कि चारों एक ही जगह कर देंगे. अगर चारों सैटेलाइट्स एक ही जगह कर देंगे तो यहाँ पे तो मिलेगा नहीं. अर्थ अगर बीच में है तो इधर में तो कुछ सिग्नल नहीं मिलेगा क्योंकि कोई सैटेलाइट्स नहीं. सो दे हैव टू कौन है शैतान ये? Satellites are placed in the orbit in such a manner that at any point on the earth there are minimum 6 satellites visible at all the time. कहीं पे भी हूं कम से कम 6 सैटेलाइट मुझको हमेशा दिखेगा 24/7 anywhere on the earth. If I am on the pole कम से कम 6 सैटेलाइट दिखेगा. If I am on the equator कम से कम 6 सैटेलाइट दिखेगा. If I am at 45 degree north 6 सैटेलाइट कम से कम दिखेगा. If I am 80 degree south 6 सैटेलाइट कम से कम दिखेगा. So the location of these satellites in their orbits are such that it facilitates receiving signal 24/7 at any location on the surface of the earth. So we will see an animation as to how the number of signals satellites visible are changing. I said that minimum of 6 satellites are visible, but then there will be maximum also, not more than 12. At any point of time, right now sitting at my chair, if I look into the sky, I can see minimum 6 satellites or maximum 12. उससे ज़्यादा नहीं, because other satellites will be on the other side of the earth, which I can't see. So that can be seen in this animation. The blue dot on the surface of the earth
is the location of the receiver. The black satellites are the visible satellites. See, watch a satellite, it goes from red to black, black to red. When it is visible, it is black. When it does not appear to the GPS receiver, then it is red. See the number, how it is changing. Never goes less than 6, never goes more than 12. Similarly, for the antennas, the antennas keep turning in such a way that it is always facing to the sun. So with this, सर ये टकराता नहीं होगा क्या सर? टाइमिंग सबका फिक्स रहता है क्या? क्या बात करते हो, जो टकरा जाएगा? ओ भाई, एक सैटेलाइट और दो सैटेलाइट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? कितना सर? 20,000 किलोमीटर तो ऐसे है, तो एक सैटेलाइट यहाँ, एक सैटेलाइट वहां जाएगा, तो उसके बीच में कितना होगा? तब तो नहीं टकराएगा सर। कम से कम होगा 1,00,000 किलोमीटर। इतना बड़ा डब्बा होता है सैटेलाइट के नाम पे, 1,00,000 किलोमीटर में टकरा जाएगा। और टकराना होता तो टकरा जाता ना भाई, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया, मतलब नहीं टकराता है। नहीं टकराया सर। ठीक है, चलो टेक ए ब्रेक, थोड़ा 4 मिनट ऊपर हो गया, टेक ए ब्रेक, गो फॉर द नेक्स्ट क्लास, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास, मेरे ख्याल से 6ठी क्लास है, विल कंटिन्यू दिस। ऑलराइट, Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Have a good day. सर जय सर का थैंक